This is Fashion Art and Create. I'm addressing in this channel. You have seen a lot of designs in this channel. I hope you did learn. Now I'm making trouser sketch. These are different trouser sketches. First I did draw a trouser sketch. This is the trouser pattern. पैटर्न में किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट किया जाता है और कलर से डिज़ाइन को इन्हेंस किया जाता है. You can see here I made different trousers designs. First we design the sketch in our mind. Whatever fashion we like, we are drawn to the sketchbook. I have given a light and dark blue color background. You can make whatever colors you like. I'm applying light and dark blue color. After that I will make design on it. This is blue color. Every color have lots of variations. डिज़ाइनिंग में हम ड्रेस के पैटर्न को डिफरेंट कट्स देते हैं और कलर कॉम्बिनेशन से हम ड्रेस को इन्हेंस करते हैं और स्टिचिंग से हम ड्रेस को कंप्लीट करते हैं. वी मेक डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट. यहाँ मैं लाइट एंड डार्क शेड देने के बाद इसके ऊपर एक टेक्सचर अप्लाई करूँगी. यहाँ इसके फ्लेयर्स को लाइन्स से एनहांस किया. Here the most important thing that we choose dress due to personality, because you will like the dress that will look good on your personality. These trousers have flared in the end of bottom. यहाँ हम इसके फ्लेयर्ड को डार्क लाइन से एनहांस कर रहे हैं. इसमें लाइट एंड डार्क कलर को मर्ज करना है, यानी कि इसको मिक्स करना है. आपको डिफरेंट शेड्स जो हैं वो क्रिएट लाइट एंड डार्क कलर को आपने एनहांस करना है. Here I am painting the upper side according to the panels. I am making freehand brush strokes. Look at there, this is abstract texture. किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए पेंटिंग डिफरेंट तरीक़ों से की जाती है. इसमें पेंटिंग में ब्रश पेंटिंग है, ब्लॉक पेंटिंग है, टाई एंड डाई है. पेंटिंग को डिफरेंट तरीक़ों से शामिल किया जाता है. डिज़ाइनिंग में पेंटिंग से आप अपने ड्रेस को एनहांस करते हैं, जैसा कि मैं अभी ब्रश पेंटिंग कर रही हूँ. आई एम मेकिंग ट्राउज़र विद द ब्लैक शर्ट. आप इन ट्राउज़र्स को शॉर्ट और लॉन्ग शर्ट्स के साथ वेयर कर सकते हैं.
bottom I applied glitter work. The shiny work looks very bright. It looks bright and glossy. I hope you did learn.